हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हाउ टू। तो आज हम आपको बताएंगे डिटर्जेंट और सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो ये बिजनेस बहुत ही शानदार बिजनेस है जिसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं होती है। अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसकी डिमांड हमेशा रहे, जिसकी डिमांड अभी भी है और आगे भी हो। तो ये वैसा ही बिजनेस है, डिटर्जेंट और सोप। आपको या मतलब इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया, अब्रॉड, सब जगह ये चीज़ रोज़ यूज़ में आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी मशीन आपको यूज़ करनी है, कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना है, कौन सा रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपको इस बिज़नेस के थ्रू होगी, कितने लोग चाहिए इस बिज़नेस के अंदर, कितना एरिया आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स में हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप सबके लिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को जान सकते हो, कैसे आपको अपने बिजनेस को जानना है। सपोज अगर आप सोप या डिटर्जेंट का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो तो उससे पहले आपको देखना है कि डिमांड है तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है, लोगों को किस फॉर्म में वो चाहिए। लाइक अब डिटर्जेंट है तो बहुत लोगों के आपको साबुन के फॉर्म में मिलेगा, बहुत लोगों के आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा। तो किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कौन से टाइप की ज़्यादा डिमांड है, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको देखना है कि क्या आप वैसे प्रोडक्ट बना के सप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप क्या प्राइस सेट रखोगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप जो भी प्राइस रखो XYZ तो वो रीज़नेबल लग रही है लोगों को, अगर वो रीज़नेबल लग रही है तो ही लोग लेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना वो डेली रूटीन में काम आता है। तो लोग ऐसे नहीं है कि ज़्यादा एक्सपेंसिव ले लेंगे, क्योंकि ये तो रोज़ का रोज़ चाहिए, तो लोग एक्सपेंसिव नहीं बाय करेंगे, लोग रीज़नेबल लेंगे। तो आपको उस हिसाब से प्राइस सेट करना है। उसके बाद कैसी क्वांटिटी देनी है, कैसी क्वालिटी देनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप ये बिज़नेस सेट कर रहे हो तो पहले आप 6 से 7 दुकानों में घूम कर आओ या कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाकर आओ कि वहाँ पे कैसी क्वालिटी दे रहे हैं, वहाँ पे कितना प्राइस है। ऐसे आप रिसर्च करो इस बिजनेस में, फिर आपको अच्छा लगे तो इस बिजनेस को सेट करो। आगे बढ़ते हुए आपको टाइप्स बताते हैं कि डिटर्जेंट के अंदर कितने टाइप्स आते हैं। फर्स्ट, हैवी ड्यूटी डिटर्जेंट, फॉस्फेट फ्री डिटर्जेंट, लाइट ड्यूटी डिटर्जेंट, फैब्रिक सॉफ्ट डिटर्जेंट। तो इतने तरह के टाइप्स आते हैं डिटर्जेंट के अंदर, जिसमें कैटेगरी भी है। कुछ डिटर्जेंट आपको पाउडर के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको बार्स मतलब कि साबुन सोप के फॉर्म में मिलेंगे, कुछ आपको लिक्विड के फॉर्म में मिलेंगे। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी भी आती है और ऐसे अलग अलग टाइप्स भी आते हैं। तो कौन सा मार्केट में ज़्यादा चल रहा है, और अगर आप चाहो तो सारे फॉर्म जितने भी टाइप्स है आप सब बना सकते हो। तो इस बिज़नेस के अंदर थोड़े बहुत फॉर्मूला भी होते हैं जो डिटर्जेंट और सोप बनाने में यूज़ आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 85% एक्टिव लैब एसिड स्लरी, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम मेटासिलिकेट, एल्कलाइन सोडियम सिलिकेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम ट्राइपोलोफॉस्फेट, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ऑयल सोल्यूबल येलो कलर, ऑप्टिकल वाइटनर, परफ्यूम, वाटर। तो ये सारे फॉर्मूलाज है, मतलब एक तरह से केमिकल रिएक्शंस है जो यूज़ होते हैं डिटर्जेंट और सोप बनाने के अंदर, जो आपको भी यूज़ करने पड़ेंगे। अगर तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो आपको ये यूज़ करने ही पड़ेंगे। तो जैसे ही जब आप ये बिज़नेस स्टार्ट करोगे तो आप पहले प्रोसीजर देखोगे कि भाई कैसे करते हैं। तो उसमें जब आप देखोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। तो इसमें रॉ मटेरियल्स भी यूज़ होते हैं और उसमें भी कुछ केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि
ट्राई सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडा ऐश लाइट, लाप्सा, सफकटेंस, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट, सोडियम मेटासिलिकेट, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज, ग्लोबल सॉल्ट, कलर, फैब्रिक सॉफ्टनर्स, एंजाइम्स, डिटर्जेंट बिल्डर्स, ब्लीचेस एंड कंपाउंड्स, caustic soda, sodium silicate, synthetic perfumes and fragrances, alkyl benzene sulfonate, polythene bags for packaging और boxes। तो ये सारे रॉ मटेरियल भी यूज़ होंगे आपके बिजनेस के अंदर और डिटर्जेंट और सोप बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। अब इसमें कुछ मशीन्स भी है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो रॉ मटेरियल, वो केमिकल रिएक्शन, उन सबको मिक्स करने के लिए, जैसे कि मिक्सिंग वेसल्स, रिएक्टर्स, न्यूट्रलाइजर, पल्वराइजर, फर्नेस, ब्लोवर्स, साइक्लोन, ब्लेंडर, वेइंग स्केल, कन्वेयर सीव, स्प्रे ड्रायर एंड परफ्यूमर, पैकेजिंग मशीन, वेस्ट डिस्पोजल बैगीज एंड प्लास्टिक बैग, एंटी पोल्यूशन यूनिट, गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव, ब्लेंडर्स, हैंड ग्लव्स एंड बेसिन्स, हाई प्रेशर टैंक्स एंड रिएक्टर्स, स्टोरेज एंड रॉ मटेरियल्स टैंक्स। तो ये सारी मशीनरी भी लगेगी आपको इस बिजनेस के अंदर। तो जैसे कि डिटर्जेंट और वो बनाना बहुत इजी नहीं है, इसमें थोड़े मशीन्स भी लगेगी जो थोड़ी ज़्यादा है, और साथ ही में रॉ मटेरियल भी लगेगा इस बिज़नेस के अंदर। वैसे सब में लगता है लेकिन किसी में कम होता है, यहाँ पर थोड़े ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट का आपको यहाँ पर कैपिटल 25 लाख रुपए, 25 lakhs रुपीज़ आपको कैपिटल में चाहिए होगा, और वर्किंग कैपिटल भी आपको चाहिए होगा पर मंथ 2 से 3 लाख रुपए, 2 to 3 lakhs रुपीज़ आपको पर मंथ भी चाहिए होगा। क्योंकि यहाँ पर इतना क्यों चाहिए? मशीनरी चलो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको करना पड़ेगा, लेकिन रॉ मटेरियल जो मैंने आपको बताया है, साथ ही में जो केमिकल रिएक्शन, जो इतने सारे फॉर्मूलाज बताए हैं, उन सब के लिए आपको पर मंथ इतने पैसे चाहिए ही होंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। आप एक बार खरीद के 25 लाख में चलो एक बार आ जाएगा, लेकिन उसके बाद भी आपको चाहिए होगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वर्किंग कैपिटल भी मिनिमम मतलब 2 से 3 लाख रुपए आपको चाहिए होगा, और उसके बाद आपकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड है कि आप कितना प्रोडक्शन करते हो। अब बात करते हैं टारगेटेड कस्टमर्स। तो यहाँ पर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, तो आपको उनसे भी कांटेक्ट बनाने पड़ेंगे, उनको बोलना पड़ेगा कि आप ये नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको उनसे ऑर्डर्स आते हैं तो आपका प्रोडक्शन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आप स्टोर्स वहाँ पर भी सेल कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सब कुछ सेल होता है। तो अब डिटर्जेंट और ये सारी जो इसेंशियल चीज़ें होती है वो भी सेल होती है, तो आप भी सेल कर सकते हो। साथ ही में सुपरमार्केट्स वहाँ पर भी, और मॉल्स, तो इन सारी जगह भी ये भी आपके एक तरह से टारगेटेड कस्टमर्स हैं, जहाँ से छोटे छोटे बहुत सारे कस्टमर्स मिलेंगे और वो यहीं पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अगर आप इन बड़ी बड़ी जगह पे, आप लोकल शॉप्स पे भी सेल कर सकते हो, लोकल शॉप्स भी होते हैं। अगर ये बड़ी बड़ी जगह आप नहीं कर पाए तो लोकल शॉप्स होती है मार्केट में बहुत सारी, आप वहाँ पर भी सेल कर सकते हो। अब बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज भी। फर्स्टली आपको पर्सनल सेलिंग, उसके बाद एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, डायरेक्ट मार्केटिंग, पब्लिसिटी, ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि कंपटीशन दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और लोगों के सामने आने के लिए आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी। और इन स्ट्रेटजीज़ को आप ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, या फिर आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हो। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना जल्दी ही आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और सेल होना भी स्टार्ट होगा। तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है आज के ज़माने में, या आज के टाइम में, क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू ही लोगों के जो प्रोडक्ट्स है वो इजीली सेल हो जाते हैं। अब बात करते हैं एरिया की। तो यहाँ पर आपको 1000 से 1500 स्क्वायर फीट एरिया आपको चाहिए होगा इस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए। साथ ही में मैन पावर आपको 10 से 15 लोग चाहिए होंगे। 1000 से 1500 एक मिनिमम
मिनिमम एरिया मतलब इतना तो आपको चाहिए ही होगा। और धीरे धीरे अगर आपका कैपेसिटी, आपका प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा बड़ा एरिया भी अक्वायर कर सकते हो। मैन पावर 10 से 15 लोग आपको चाहिए ही होंगे इस बिजनेस के अंदर इसको रन करने के लिए। अब बात करते हैं लाइसेंसेस की। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस लाइसेंस, एनओसी फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएसटी, बीआईएस सर्टिफिकेट, रजिस्टरिंग फॉर अ ट्रेडमार्क, तो ये सारे लाइसेंस आपको इश्यू करने ही पड़ेंगे इस बिजनेस को सेट और रन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए भी। प्रॉफिट, तो आप रिटर्न पर मंथ 30,000 to 1 लाख अप्रोक्सीमेट आप इतना अर्न कर ही सकते हो। आप इससे ज़्यादा भी अर्न कर सकते हो इस बिज़नेस के अंदर। अगर आप एक बार सेट हो गए उसके बाद आप इससे ज़्यादा ही अर्न करोगे, लेकिन इससे कम नहीं। और बाकी आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पे डिपेंड है कि आप कितना अर्न कर सकते हो, आपकी क्या प्रॉफिट मार्जिन है, आपके कितने एक्सपेंडिचर्स, आप उन्हें कैसे मैनेज करते हो। ये सब आपके प्रोडक्शन और आपके बिजनेस मॉडल पे ही डिपेंड है। तो ये था डिटर्जेंट एंड सोप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो बहुत ही इसेंशियल चीज़ है, जो डे टू डे डेली रूटीन में ये चीज़ काम आती है, जिसकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको कुछ साल लगेंगे सेट होने में, लेकिन एक बार सेट हो गए फिर आपका बिजनेस बहुत ही शानदार चलने वाला है। तो हम ऐसे और भी बिजनेस लेके आएंगे जिससे आपको बहुत ही बढ़िया मुनाफा हो और आप इजीली उसको स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा बाय सब्सक्राइबिंग आवर चैनल, और साथ ही में लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। Hi, thank you so much for stopping by the channel. So we are doing mass production of liquid soap. This is the real mass production. In case you want to do it as a business, then this is the right video for you. So this is the base we are using. I'll give you the prices of each of the materials, as well as the profit you make and everything. Like, you know, it's all about making money. It's money making Saturday. Okay, so yeah, let's make money. So this is the second one. The base is 1 kg each. All the materials will be in the description box with their prices in Ghana. Okay, in Ghana, but the prices vary from places to places, but this is the prices, the wholesale prices. We got it, so then you can calculate the profit you make from there. So this is the second base. He's going to add the third one. This is the third one. And make sure you squeeze everything out, because it's all money, you know. So make sure you squeeze every single base out. And then this is the fourth one. He normally does 5 at a time, but this time around I think I was worrying him with too much talk, so he forgot and he did 4, but that's fine. It's also all good. So 4. So this is the fourth base. And normally when he uses 5 of the base, then he'll use 5 is 5 kilogram, because 1 is 1 kilogram, so 5 of that is 5 kilogram. Then he'll use 2.5 kilogram salt. This is salt, normal salt we use in the kitchen, and 1 of what he just poured is 1 kilogram. Okay, this is half kilogram, so that's 1.5 kilogram. And then he went ahead to add another 1 kilogram. He thought he used 5 of the base, but it's all good, it doesn't spoil anything. So if you are using 4 of the base, then you use 2 kilogram of salt. It's half of the base. So if it's 4 kilogram of base, is 2 kilogram of salt, just that. Then he went ahead to add water, and he's just going to stir it in one direction. Like, yeah, that's very, very important, in one direction. So just keep on stirring. It becomes very thick, so you keep on adding water. Basically that's basically what you do for liquid soap. So he's just going to stir. You realize there are lumps in it. When you start afresh, it's fine, you are not making any mistake. Then you just keep on stirring until it becomes uniform, until it becomes pasty. Then you keep on adding your water. Yeah, you see those margarine buckets there? I think he used 4, but you will be counting, so don't worry, no worries about that. Let's just enjoy the video in peace. Okay.
Yeah. And so let me use this chance to tell you the prices of the materials. Okay, so the base, we got one for 23 cedis. I think because we're buying many, because we bought 50 pieces, like 50 kilogram. That's 50 50 1 50. So 50 kilogram of the base, and he gave it to us at 23 cedis for one. So 1 kilogram is equal to 23 cedis times 4 is I think 4 is 12, so 92 is 92 cedis. And then the salt, I think it should be like 5 cedis. So if the salt is 5 cedis, then 2 of that is 10 cedis. So then we have, let me get my pen and paper. So the base, I'm writing, the base is equal to 23. So he's just going to add water. It becomes very thick. When it becomes very thick, he keeps on adding water. Basically that. Let's continue with our calculation. So the base is 23 cedis times 4 is equal to 92 cedis. And then the salt is equal to 5 cedis times, ideally use 2, so we are just going to use 2, is equal to 10 cedis. And then what are they? You pay the water bill later. So we what next did he add? He added booster, and the bottle, one bottle is 10 cedis. He added 2, so it's equal to 20 cedis. He added thickener. I'm listing it in order in which he added them. Thickener. And when you are pouring the water inside there, you don't pour it from afar. You bring the whatever you are using to fetch the water very close to the soap, so that it doesn't foam. Otherwise your soap will end up becoming very foamy and you see a lot of foam at the end. That's not professional. We are professionals here. We are doing professional stuff, so don't worry about the water. Just keep on adding because it keeps on getting thick. So back to business. Thickener, one bottle is 10 cedis and he used 2, so that's also 20 cedis. That's another water for you. And then preservative there is not expensive, so you see, oh, shame on us, our bucket and that is dirty, so he has used 1 bucket. So preservative is 2 cedis times 2, we have 4 cedis. And then and what again? Color is also 2 cedis times 2 is 4 cedis. And then perfume is a bit expensive, so the perfume, the small bottle is 12 cedis. So let's say we use 2 of that, so 12 times 2 is equal to 24. So this is the second bucket of water he's using. Now you realize it has become very uniform, so he is adding more water at a time. So let's just go ahead and add up everything. So 2 plus 4 is 6, 10, 12, 14. Oh no, we made a mistake. Okay, so 2, 6, 10, 2, 6, 10, more water, 2, 6, 10, 14. So 14, remember 1, 10, 11, 13, 15, 15 plus 2, 17. 8. Really? So then the total is 174. And then when he does it with this, so this is the fourth water. Yes, because I had to pour 1 inside. I paused the video and I poured 1 inside. Okay.
and now he has added another one. So this is the fourth water. You realize it has become very, very liquidy, but it will thicken up. So now the total cost is 174. And let's say the gallon is 10 cedis each. The big gallon, the very big one, I will put a picture on the screen. The big one is 10 cedis. It can take 2. This can fill 2 of the gallons, so that's 20 cedis. So you have 194. That's the total cost. And then you can sell 1 gallon for 150. So times 2, you are going to get 300 cedis minus 194. You have 106. That's the total. And this thing is like cake. The more you do it, like the more quantity you do, the more profit you get. If we did the 5, so that he's going to add the thickener. This is the thickener he's adding. That's 1 bottle. So the small bottle is 10 cedis. Okay, that's why I said 2 bottles is 20 cedis. So that's 2 bottles. That's 20 cedis. So once that was added, I think I was worrying him with talk. We are just going to keep on stirring. You realize it has taken up a little, and the thickener makes it more thick so that I can add more water and get more profit. The bowl is big. Oh, from how you are seeing it is big, rough. It's extremely big, very, very big. So you have a profit of 106. Let's say 6 cedis goes into flyer and those stickers and everything you put on the package and those things. You've made a profit of 100 cedis from the 2 gallons. You see, and it takes less than 30 minutes to do this. So Charlie, if you are thinking of going into, and all you needed was 200 cedis, this 200 cedis, you've made a lot from it. And the gallon takes 5 of the white gallon he's holding. So this is the booster. He's going to add 2 bottles of the booster. The big gallons take 5 of the small gallons he's holding. Okay, so let's say you decide to sell it in this small white gallons, then you are going to get 10 of these small gallons. And 10 of these small gallons, one of the gallon is, one cost of gallon is 35 cedis. If you are selling it in the small gallons, it's 35 cedis times 10. You have 350. 350 minus, you let's say 200. You have 150 profit. So if you decide to sell it in the small gallons, then you are going to make 150 cedis profit. But if you decide to sell it in the big gallons, then you are going to make 100 cedis profit. This is the preservative. He's just going to use 1 spoon, another spoon, and a third spoon. So he used 3 spoons. Yes. So we are done. Oh, that's basically our soup. And because we are doing it in large quantity, he didn't add the color straight away. He added it the next day. So he just went ahead to pour it in a very big barrel so that he can do the next batch. Okay, you see it has taken up. Oh, the thickness depends on you, but if you are doing it for sale, then you should do it in such a way that a customer will be appreciative of it when they buy it. You buy. Hey, speaking pidgin with you guys. You understand? It's really thick. So liquid soap, the money is inside, especially if you get to do it for a company that buys it frequently, or you get to do it in large quantities for people. You are going to cash out, but it's a bit tedious. Like, it requires a lot of stirring and a lot of energy. So
better yet, you can just hire people, like someone to do it. If you hire these by day people, my workplace, we have people who do by day, and we pay them per the day they come. Okay, so you can get these by day people to come and do it one day for you and go, and that day make sure you use them very well. You make sure you use them very, very well, so that at least you bab. So that's my leg. We're done with it. We're basically done with the liquid soup. He's just stirring to make sure everything has mixed well, and then we went ahead to pour it in the big barrel. Basically that is not difficult at all. Yeah, so we didn't add the color. If you want to see how the color was added, then you can check the other tutorial and it will just be right there. So this barrel takes 300 liters of whatever liquid you are putting inside. So that's 300 liters, almost full. Yeah, so thank you so much for stopping by the channel once again. If you did enjoy the video, please don't forget to subscribe, and let me know in the comment section if you go and try it. Like, if you want to make it into a business, let me know in the comment section, and I'll see you guys in the next video. Peace out. No, not peace out yet. Please subscribe to the channel, because I'm sure you've enjoyed the video. Please subscribe to the channel, okay? And I'll see you guys in the next video. Mwah. Peace out.